Welcome students. Today we are going to discuss about the geography part again and with the topic of agriculture. Now let's discuss, as you are a student of 10th standard, you might be knowing about the agriculture. Now can you talk, we are living in a country named India. Can you tell me about something about India? Yes, it's right. In your mind always it comes, it's a very vast country. सबसे पहला ही हमारे क्वेश्चन माइंड में आता है, इट्स वेरी वास्ट कंट्री. द सेकेंड आंसर इट कम्स, इट्स अ सेक्युलर कंट्री. ठीक है, बट ये सब चीज़ बात हो गई इकोनॉमिक्स पार्ट में और ये सब बात हो गई पॉलिटिकल साइंस के बारे में, राइट. बट हम आज पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी के रिलेटेड अगर हम बात करना चाहें, सो इफ लेट मी गेस दैट सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ योर इंडियन map, if we talk about, so here we are talking about the, today we are going to discuss about the India, some of the part. And this part is very much useful today because you will be knowing what was India is actually, right. From the picture itself you can come to know that it is India. पिक्चर से आपको पता चल जाएगा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इंडिया एंड द मेन थिंग इज एग्रीकल्चर. व्हाई इट इज इंटरलिंक, कैसे ये इंटरलिंक है इस चैप्टर से, हमारी कंट्री कैसे इंटरलिंक है. बट ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ऐसी पॉपुलेशन है दैट इज 60 to 70% पॉपुलेशन किस फील्ड से जुड़ी हुई, एंड दैट इज agriculture. And that's why today we are going to discuss about this priority basis topic, right. So this is what we are going to discuss. हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एग्रीकल्चर के बारे में. अब ऐसा है क्या एग्रीकल्चर सिर्फ एक ही मेथड से हो सकता है? एग्रीकल्चर करने की बहुत सारी मेथड्स हैं, बट कौन करता है एग्रीकल्चर, ये सारा काम कौन करता है? बट ऑब्वियसली फार्मर्स. Who will do this work? Farmers, obviously. So farmers is the main source of our India. जो काम करता है बेचारा, रात दिन मेहनत करता है. और अभी हम सिचुएशन कोरोना की देख सकते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा लाइफ किसकी रुइन हो रही है? फार्मर्स की, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करके काम कर दिया और अभी कोई खरीदने वाला उनको नहीं मिल रहा है. सो अभी जो हम सिचुएशन में है वो और हमारा चैप्टर दोनों ही इंटरलिंक है. So today we are going to discuss in both the manner. So live examples आपको इसी चैप्टर में देखने मिलेंगे, right? Now, अब हम डिस्कस करते हैं पहले थोड़ा बहुत फार्मर्स के बारे में, then we'll go jump overall directly to the chapter. फार्मर कैसा होता है बेचारा? बहुत पुअर होता है. कुछ फार्मर्स के पास लैंड होता है और कुछ लैंडलेस होते हैं. जिनके पास लैंड होता है वो अच्छे से काम कर पाते हैं, जिनके पास नहीं होता है वो तो और भी पुअर, वो बहुत अंदर से इतना फील करता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसको और कुछ काम आता नहीं है. देन व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू द अनदर लैंड, ही विल आस्क, वो पूछेगा कि आप मुझे काम दोगे, फाइन. तो फिर उसके बाद वो धीरे 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 अपनी फैमिली को 2 times a meal a day, आपको ये सब कुछ आ चुका है 9th स्टैंडर्ड के अंदर. अगेन आई विल रिपीट, 2 times a meal a day का मतलब क्या होता है? 2 टाइम का खाना अपनी फैमिली को वो खिला सके, ठीक है, जिससे ओवरऑल उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टॉपिक ऑफ फार्मर्स. नाउ हियर वी आर हैविंग द डिफरेंट टॉपिक्स ऑल्सो. सो लाइक वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. सो व्हाट इज फर्स्ट टाइप इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. एंड दिस सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर भी दैट इज प्रिमिटिव. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ सबसिस्टिव फार्मिंग. ना प्रिमिटिव स्टाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब हमारे जो पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे जो फोर फादर्स थे वो लोग, ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले उनकी चीज़. तो उस टाइम पे बहुत सारी ट्राइब्स हमारे इंडिया में आई, सेटल हुई और चले गई. सम ऑफ द नेम्स आई वुड लाइक टू लिस्ट, दैट इज फॉर इंफॉर्मेशन, दैट इज आर्यंस वेर देयर, देन द्रविडियंस वेर देयर, फिर
नीग्रोज आए थे एंड सो ऑन. सो देर आर सो मेनी ट्राइब्स हु ट्रैवल्ड इन इंडिया, राइट. ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स आई, उन्होंने कल्चर अडॉप्ट किया और फिर वो चली भी गई. लेकिन एक्चुअली वो क्या काम किया उन्होंने सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर. सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स वो क्या करते थे, उनको जितना उगाना है, हाउ मच प्रोडक्शन दे वांट टू डू, वो सारा प्रोडक्शन उस एरिया में जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे वो कर देते थे. वंस द प्रोडक्शन इज डन, they will go for, so first of all what kind of work they will do the work of production, then they will shift to harvesting of that production, और उसके बाद the third thing is they'll go for consuming the goods, that is the eating area they will go for it. Now एक बार वो एरिया का सब कुछ हार्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद क्या, कोई और एक्टिविटी करेंगे या अगेन वो ऑब्वियसली वही एक्टिविटी करेंगे क्योंकि उसके अलावा तो उनको कुछ आता ही नहीं है. देन हियर व्हाट दे डू, दे स्लैश द लैंड एरिया. नाउ व्हाट इज दिस स्लैश द लैंड एरिया मीन्स दे बर्न दैट लैंड एरिया एंड देन दे मूव ऑन, दे गो टू द अनदर पार्ट of land. Again the same activity is going on and this is what this subsistence farming is done. There are so many other methods also apart from this subsistence farming. Can you tell me, have you read the textbook? Do you know what is another types of this farming? Can you name them? Is there anyone? Okay, fine. So it's related to population and that is intensive farming. Now let's discuss about intensive farming, right? So now what is this intensive farming method is there, and that is to subsistence. It's not only intensive farming, it is intensive subsistence farming. Now what is this? What we are going to discuss about today. Now this farming is actually done in a very डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, जैसा डेंसली पॉपुलेटेड हम लोग बोलते हैं, उस एरिया में ये फार्मिंग हो सकती है जहाँ पे हाई यूज़ ऑफ केमिकल्स वो लोग यूज़ करते हैं, जिससे केमिकल्स यूज़ करने के बाद उनको इनपुट्स ज़्यादा मिले, इनपुट्स करने पड़ते हैं और उसके बाद उनको प्रोडक्शन उनका बढ़ जाए. So you can see the results by using biochemicals, you can see the results will be quite better. So there is huge pressure is there on population. As we know, which rank of India comes in terms of population? All right, it's second rank. India ranks second in the population after, yes, China. Again, China is the one who has locked down our entire India by sending corona from their science lab. So because of this only our farmers life is totally ruined. उसके कारण ही हमारी पूरी farmers की life ruined हो गई. और obviously अगर farmers की life ruin हो गई तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन खत्म हो जाएगी, कम हो रही है. इकोनॉमी कम होगी का मतलब क्या हुआ, पर पर्सन इनकम, पर पर्सन इनकम, दैट इज अवर व्हाट वी कॉल एज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा. पर कैपिटा इनकम कम होगा तो क्या होगा, यस, दैट इज नेशनल इनकम. और अगर नेशनल इनकम कम हो गई तो हमारी कंट्री इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, कंपटीशन के अंदर कभी भी खड़ी नहीं रह पाएगी. राइट नाउ वी आर द इंडिया, वी आर स्टैंडिंग इन डेवलपिंग कंट्री. और इंडिया के अंदर क्या हमारा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है सिर्फ. वी आर नॉट फाइंडिंग ग्रोथ, हमको ग्रोथ नहीं मिल रहा है जो एक्चुअली डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये दिखता है ज़्यादा. और हमारे इंडिया के अंदर क्या दिखता है, development. Why? Because the reason is we are not following the rule of sustainable development.
अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट लेट मी डिस्कस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर, राइट? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नाउ द easiest meaning of sustainable development is nothing but whatever you have received it, that is air, land, whatever you have received from the nature, that all things you should keep them as pure and unpolluted for our future generation. Are we doing it? Tell me honestly, are we doing it, all these activities? No. Some will tell yes, some will tell no. So 90% of the people will tell no, but there are only 10% of the people, few members are like that, they are keeping it safe. But apart from that, these few peoples, what happens? Because of these peoples only, what is happening? That 90% people are suffering. So come on, let's go on the different types of farming. So first farming was clear, so subsistence farming can come. So the word which you need to remember is slash or burn, right? Here if you are talking about intensive farming, then here what you are going to read about? Densely populated एरिया. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जिसके अंदर इंटेंसिव फार्मिंग होगा, राइट? और उसके अंदर आपको और क्या याद रखना है? ये क्वेश्चन आ सकता है अबाउट बायोकेमिकल्स, राइट, विच इज हेल्पफुल इन दी प्रोडक्शन पर्पस. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ बेसिक्स है. अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो यू कैन नॉट रीड अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, right? So these are the basics which are actually required for the overall growth and development of our country, and that is India, and then only will make it as more and more will feel proud. So first of all, is it clear everyone up till this? Subsistence farming or intensive farming, I don't think so कि आपको कोई doubt रहेगा about the tribes, हम कहाँ से ये subsistence farming सीखे थे. It is not mentioned in your textbook. Minded, it is not at all there in your textbook that from where this all peoples came, but directly they have given that ये subsistence farming मतलब primitive subsistence farming, और वो slash कर देते बर्न कर. लेकिन कहाँ से आए ये सब? आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना, कि हम ऐसे ही रट्टाफिकेशन थोड़ी कर देंगे. अगर रट लोगे तो आपको सिर्फ थोड़े टाइम तक याद रहेगा, आफ्टरवर्ड्स यू विल नॉट बी रिमेंबरिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस सबसिस्टेंस फार्मिंग, एंड दैट वाज द डिफरेंट टाइप्स केम. एंड सो what happened? The slash and burn and all, right? So this is what we got as overall developmentary stage of this farming area, and that we call as agriculture. Now let's discuss about the other part, and that is non-farming. Now can you tell me what we talk about non-farming? You have already learned in your last year. Apart from that, even you have learned in your 7th standard also, 8th, and you are a 10th standard student. तो आपको पता होना चाहिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी होगी. यस, नॉन फार्मिंग मतलब सिंपल. आप किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन पूछो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, तो वो हमेशा एक ही जवाब देगा, सर जो फार्मिंग में नहीं है दैट इज नॉन फार्मिंग, है ना? हमेशा यही जवाब मिलता है कि ना फार्मिंग के अंदर जो एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होती तो वो नॉन फार्मिंग में आ जाती है. बट द एग्जाम्पल्स शुड बी मोर क्लियर. दैट इज you can called as cattle rearing, dairy farming, right? There are there are so many numerous examples you might having, but this is what we have discussed today, the overall about the sector which we call as agriculture. Agriculture sector, आपको पता है agriculture sector को किसी और नाम से भी जाना जाता है. अगर आपके स्टडीज़ के दौरान अगर आप थोड़ा सा आपने थोड़ा कट थ्रो किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा एग्रीकल्चर सेक्टर को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज प्राइमरी सेक्टर. ओके, सो यू शुड रिमेंबर, इट माइट नॉट कम इन एग्जाम, बट आपको ये थोड़ा बहुत फॉर नॉलेज भी पता होना चाहिए. ऐसा ना हो कि बाहर जाओ आपको किसी कोई पूछ ले एग्रीकल्चर, देखो पता है कि कौन से सेक्टर में आता है, और फिर आपको पूरा चैप्टर आता है लेकिन आपको यही नहीं पता. तो हमेशा सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसका जो हेडिंग होता है वो अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके डिक्शनरी मीनिंग्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि क्या उसको रिलेट करता है. होप यू अंडरस्टूड द 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग
We'll discuss the different types of farming in our next lecture.